हेलो एवरीवन। जैसे हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं एक्टिव पैसिव, वी हैव ऑलरेडी डन सिंपल पास्ट को कैसे एक्टिव पैसिव में चेंज करना है सिंपल पास्ट का। तो इन द सेम सीक्वेंस टुडे वी हैव टेकन एन एक्सरसाइज जिसमें हमने 5 सेंटेंस लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव जो कि है सिंपल पास्ट है, उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है, स्पेशली इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है उनको कैसे आपने चेंज करना है पैसिव में। लेट्स सी डिड विशाल हेल्प मी। सबसे पहले हमने क्या है देखना, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वॉज। मी का बनेगा चेंज हो जाएगा आई। वॉज आई हेल्प्ड बाय विशाल क्वेश्चन मार्क। देन वी हैव द सेकंड। आई होप आपको समझ लग रहा है जी, समझ लग रहा है? Yes, sir. दूसरा सेंटेंस जो है डिड पर्नब टैकल दिस इशू। वॉज दिस इशू। सबसे पहले ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट। ये सारे मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। वॉज दिस इशू टैकल्ड बाय पर्नब। ओके, सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू चेंज द पैसिव वॉइस। इसमें अगेन हम यहाँ देखें इन दिस सेंटेंस और लेटर इज द ऑब्जेक्ट। So we are going to make it interrogative in the passive voice or letter. Was a letter was written by Tanu. Was a letter written by Tanu. A write, wrote, written. Written is the third form. So remember in the passive voice we are going to use the third form of the verb with the remaining rules. Then we have a new lesson. Did they learn a new lesson? Was a new lesson. Learn. Was a new lesson learned by them. So in this way we are going to convert the active to passive voice. Then we have last sentence in the simple past. Now we will change it into passive voice. इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। Did दिलजीत सिंह sing a new song? क्या दिलजीत सिंह ने नया गाना गाया? तो इसको हमने चेंज करना है इन द पैसिव वॉइस। Was a new song sing, sang, sung. Sung is the third form of the verb. Was a new song sung by Diljit Singh? Question mark. So in this way we have finished the simple past active to passive voice. Thank you very much.